Welcome everyone. It is our first session, chapter number one, function of operating system. Okay, so it is based on your operating system. Every topics will be covered relates to your operating system. Okay, so we will see what is operating system and what is software. So whatever the topics it has given in this chapter, we will discuss. So let's start. This is the ICSC Class 8 book. Book name is Logix. Okay, so first chapter is functions of operating system. So let's start. First, I will discuss about the functions of operating system. That means functions of operating system. Try to understand what is the sense. Functions means features. Okay, functions means just like as a features. That means we will discuss about the features of operating system. Okay, so let's start. Operating system. What is operating system? Operating system is just a system software that controls the physical part of computer. Okay, so I will discuss in this chapter. Okay, so a computer is a useful machine that works on the interaction of hardware and software. So computer, यहाँ पे computer क्या है? It is just a useful machine that works on the interaction of hardware and software. So like if you are using a phone, so it is the combination of hardware and software. Your phone is hardware and the applications are software. Okay, hardware and software are independent on each other. A hardware needs a software to operate, and a software cannot be utilized without the supporting hardware. So think about it. Hardware and software are dependent on each other. How? Because of, if suppose if your phone is hardware, okay, in your phone, on your phone there is no applications. So what will you do? So what will you do by you with your phone if your phone doesn't have any application? So what will you do? So that's why phone and your phone application both are independent, both are interdependent. Okay, that means hardware and software are interdependent. Hardware is dependent on software and software is dependent on hardware. Okay. So every hardware needs an operating system, or every hardware needs the software to control the device. Okay, so because without software we cannot control the hardware. Okay, I can say our aura is the software and our body is the hardware. So without aura, body is nothing. Okay, so hardware refers to the physical part of computer that you can see and touch, such as monitor, keyboard, mouse, printer, and other components fixed inside the CPU cabinet. So, what is hardware? Hardware is the physical parts. Physical part means the parts which we can touch. Okay, like compute, like a monitor, like keyboard, like printer, like all of the devices, physical devices. So printer, pen drive, so all of the devices which can touch and feel, that is known as the physical part of computer, like as we can say it is also known as hardware. Okay, so that the device which we can touch and feel, that is known as the hardware. Okay, so software refers to the instructions or programs that tell a hardware what to do. Software enhances the capability of hardware and directs the computer to perform a specific types of activities. So what is software? Software is just instructions of program. Instructions means set of instructions, means it is a bunch of instructions. Okay, it is a bunch of instructions. What is program? Program means it is a collection of instruction. Whatever the statement, whatever the instruction I will give to the computer, or by using my software, computer will act like as that. Okay, so जो भी सिंपली समझिए कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे वाया सॉफ्टवेयर,
ये वैसा काम करेगा। सपोज आई हैव गिवन द आई एम रनिंग ए मूवी, so computer has got an instruction to run the movie, so it will run the movie. Okay, so software gives the instruction to our computer or our hardware what it need to do or it has to do. Okay, and it also enhances the capability of hardware and directs the computer to perform a specific types of activities. So if you want to perform some specific activities, then you can software helps it to perform these types of activity. Next example, a mobile phone is a hardware. Already I have given the example about it. A mobile phone is a hardware, and all the software applications it has are called software. Without the applications, mobile phone is simply a plastic case, and without the hardware mobile phone, these applications cannot be used. Simply I have explained this. सिंपल सा बात है, मोबाइल में अगर एप्लीकेशन होगा ही नहीं तो मोबाइल जस्ट एक कह सकते हैं एक प्लास्टिक कवर है। ठीक है, उसके अलावा कुछ है नहीं। अगर सॉफ्टवेयर उसके अंदर है, इनबिल्टेड है, तो वो यूज हो सकता है, मतलब बहुत है इंडिपेंडेंट। Okay, not independent, interdependent. So there are two types of software: system software and application software. So let us start, everyone. So how many types of software? There are two types of software. First one is system software. Second one is application software. System software. There are two types of system software. That is operating system and utility software. And there are two types of application software: general purpose and a special purpose. That is tailor made. Okay. So first I will understand system software. Okay, so system software is the type of software that controls the physical part of computer, mainly physical parts of computer. Okay, system software वो होता है जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, like example, operating system. Okay, like Windows 7, Windows 8, Windows 10. So if you, आपके फ़ोन में क्या होता है, एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप फ़ोन ओपन करते हो तो सबसे पहले लिखता होगा एंड्रॉयड, तो वो क्या करता है, फ़ोन को ऑन करते ही वो एक इमेज आता होगा, एंड्रॉयड इज स्टार्टिंग लाइक दैट। तो वो क्या करता है, आपके फोन को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको ऑन हो करके उसके सारे एप्लीकेशंस को लोड वगैरह करना है, और जो भी उसमें फंक्शनलिटी दिया है उसको एक्टिवेट करना है। तो ये काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखेंगे। वी विल सी यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, लाइक दैट। So a system software is a collection of programs that helps to run the computer's hardware and other programs. So system software, uh, the work of system software is to run the computer hardware and other programs. Okay, so it makes our computer hardware and our programs to ready that we can use at any time. Okay, at any we can perform any action at any time. So it manages the hardware, resources, and other application softwares. ये एक सिंपल सा बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर को ही मैनेज करेगा। ठीक है, और अदर एप्लीकेशंस मीन्स जो इसमें इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। इट रीड्स द डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड ट्रांसफर द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेस। सो इट रीड्स द डेटा, so whatever I have given the input in the computer, it process our input, and then after processing it generates the output or it shows the output. देखिए कंप्यूटर में क्या कंप्यूटर क्या होता है, आईपीओ साइकिल पर काम करता है। आईपीओ साइकिल मीन्स input processing and output. Okay, so what is IPO cycle? Input processing and output. Whatever I will give the input, it will process it, and after that, after processing, it will give the output. Like a real life example I am giving to you. Suppose आपको अच्छा खाना खाना, सपोज कीजिए आपको चीज चीज खा मतलब कि आपको एक बहुत अच्छा डिश खाना है, तो क्या करेंगे, उसका रॉ मटेरियल आप कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उस रॉ मटेरियल को आप क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, मतलब लेंगे, और उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे, मतलब उसको बनाएंगे, और उसके बाद उसको सर्व करेंगे, दैट मीन्स उसको आउटपुट दिखाएंगे। तो यही होता है आईपीओ साइकिल कंप्यूटर में। सपोज इफ आई हैव गिवन
if I have given 2 plus 2, so it is the 2 plus 2 is the input, and when computer is calculating, then it is known as processing. Okay, and after that, after generating the output, it will display our 2 plus 2 is 4, so the 4 is our output. After processing, it will display the output. Okay, so whatever the output we will get, it is based on our input, whatever the input I have given to the computer. Okay, so next, common examples of system software are operating system like Windows, Linux, Unix, Mac OS, Android, etc. Okay, so utility software based on our system. Okay, that means that kind of application which is especially used for for our to perform any action on our especially for on our system hardware, like as disk cleanup. Okay, disk cleanup means it cleans the our hardware, it cleans the our hard disk space. Okay, so whatever it we have stored in our computer or on our hard drive. Okay, hard drive, that means it is the storage device of our computer. Okay, so it cleans. When I delete the file, some of the files it cannot be deleted, and by using this cleanup we can delete. Backup means if our computer sometimes we get computer has crashed or your phone has got crashed, so that on that case we uses backup. Compression, some of the files, if you are having bulk collection of files, then you can use compression. Okay, so language processor and device drivers. Device driver is also a utility software because of without device driver you cannot run your operating system. Okay, system software and operating system also. So if you are using printer, if you are using mouse, if you are using keyboard, every device which you have connected to your computer, it needs the driver. Okay, so it is device drivers. It is called as a utility drivers. Sorry, utility softwares. Okay, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का दो पार्ट है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा यूटिलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल यूजर बेस्ड होता है। ओके, सिंगल यूजर बेस्ड होता है, इसमें सिंगल यूजर ही काम करता है, और मतलब एक कंप्यूटर में डबल ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग नहीं डाल सकते। अभी का टाइम आ गया है कि हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन एक से दो डाला जा सकता है, ज्यादा नहीं डाला जा सकता है। अभी तक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को कंट्रोल करता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कम्स इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही इंस्टॉल होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को इनहेंस करते हैं, लाइक डिस्क क्लीन अप, डिस्क को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म एज स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब्स like doing calculations, arranging data, and other and arranging the data in an organized manner, designing professional documents, creating images, logos, Word, PowerPoint, 3D, Paint, Excel are some commonly used application software. So it has given up the type of application software simply, the application software which simple, देखिए application software होता क्या है, वैसा एप्लीकेशन जो आप एक्सटर्नली डाउनलोड करके डालते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रेयरली केस में समझ लीजिए, ज्यादातर जो हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं वो एक्सटर्नली डाउनलोड करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आपके फोन में होता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उसमें क्या होता है कि डाला जाता है। तो ये क्या, इस टाइप का एप्लीकेशन, इस टाइप का सॉफ्टवेयर क्या हुआ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, हाँ। आपका और भी, जैसे आप एंड्रॉयड फोन लेते हैं तो उसमें बहुत सारा जितना भी ऐप दिया होता है होता है ना, उसमें ज्यादातर ऐप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही आता है, जैसे आपका डायल पैड हो गया, आपका मैसेजिंग हो गया। ठीक है, आपका कैमरा हो गया, तो ये सब आपका कैमरा नहीं, कैमरा आपका आ जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये कंप्यूटर आपके फोन के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है,
तो इसी तरीके से है, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिया, वर्ड, पावर पॉइंट, पेंट, एक्सेल। सो दीज आर द कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस आर यूटिलिटीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, सिंपली समझ लीजिए इसका एग्जांपल, अगर एग्जांपल आ जाता है एग्जाम में तो सिंपली समझ लीजिए एग्जांपल क्या होगा। आप एग्जांपल वैसे वैसा एग्जांपल दीजिए जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है या फिर फोन के अंदर आपका इंस्टॉल्ड है। ठीक है। वैसे एप्लीकेशन को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। माइक्रोसॉफ्ट एज, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, फोटोज, नोटपैड, पेंट, फोटोशॉप, कैलकुलेटर, 4K video downloader, VLC media player. So these all are the application softwares. Okay. So next, in the next session, I will discuss about the operating system. Okay. So we will see how operating system works. Okay. It is a very short video I have tried to discuss. Okay now. So in part two, I will discuss about the operating system. Okay. So we will see functions of operating system, process management, memory management, device management, security protection, up to provision of user interface we will discuss in the next session. Okay, and the third session we will discuss about the types of operating systems. Okay, so it will take one, two, three, four lectures I will take to complete this chapter. Okay, and don't worry, I will also provide the question answers. Okay now, I will also provide the question answer, complete question answers I will provide, like fill in the blanks, true, false, complete answer I will give to you, including our your question answers, disk type, hardware, software, list the different types of software I will provide to you. Okay, don't worry. Okay, so thank you everyone. Thank you.